Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. Standard 4 Vikas Maths Magic Workbook, and we are doing chapter 10. Chapter name is Play with Patterns. This video is continuation of this chapter. In my last video I already explained you this chapter, all the problems and everything. So today I am going to explain test yourself and let's do homework. Do concentrate here. Choose the correct alternative for each questions and write its order alphabet in box. Okay, here is given the example is now see this is a box. Here is given two triangles. In this rectangle box there is a both are opposite side, so this box is right with a one triangle. So what fill here? This position, this position, this or this, that you have to fill. So here is a two triangle, both faces are both same side. So here is the one triangle, so these triangles also come these faces. Okay, so where is this? This look like on a D. ये कैसा दिख रहा है? D की तरह दिख रहा है, तो D is the right answer. Right here D is your answer. After this, see the second number question. Which number replace the question mark? 4, 9, 6 and 7 in a triangle is given here. 1, 6, 2 and 5 on a second. Third, 4 and this is empty. This you have to fill. 3 and 8 is given here. How we will fill? So 1 and 3 is equal to 4. 3 and 3 is equal to 6. 5 and 2 is equal to 7. Okay, 9 is given here. 1 plus 0 is equal to 1. 2 plus 0 is equal to 2. 3 plus 2 is equal to 5. Now see the next one. So 1, here is a 1 in a circle and then 5. फर्स्ट नंबर को हम लोग लेते हैं 1, 5 and then this is the 3. So 5, 3, 8 and 1, 9. So कितना हो गया? टोटल कितना आया? 9. इसी तरह सेकेंड ट्राइंगल में 1, 2, 3 and 3, 6. Here 1 plus 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू 4. 1 को हम लोग सर्कल कर दिए. 3, 2 plus 1 इक्वल टू 3. 4 plus 4 इक्वल टू 8. So 1, 2 and 4 we will take. So 1 plus 2, 3 and 4, 7. So 7 you have to write here. So A is the right answer. 7 you have to fill. Like this you have to find out the triangle measurement and you have to fill here in a question mark. In the question marks you have to fill the 7 number. Now see the third number. Third number is given here. If the bed B-E-D, bed spelling is here, B-E-D is code as 254. B-E-D का क्या कोड है? 254. 2 में क्या आया? B, E में आया 5 और D में आया 4. Then the bed, here is a bed spelling, here is a bed मतलब खराब. B-A-D bed. 214. Here is a bed spelling, the is code as what? As what we are going to find out. ये bed का spelling हम लोग किस तरह से find out करेंगे? Code. So here is given the 1, 2, 3, 4, 5. 5 को हम लोग कोड में अल्फ़ाबेटिकल कोड में हम लोग सजा देंगे. किस तरह से? इस तरह से, जिस तरह से मैंने फॉर एग्जाम्पल सजा दिया है यहाँ पे. अल्फ़ाबेटिकल कोड 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1 means A means 1, B means 2, C means 3, D means 4 and E means 5. So here is B means 2, A means 1 and D means 4. So you have to write here. So bed means 2, 1 and 4. So C is the right answer. You have to write here C only. Then see the next question. Question number 4. Which shape? Triangle. Here is a square. Then after 5 angle is here, 6 angle is here. Which one come the next?
ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 1 2 एंड 3, स्क्वायर में 1 2 3 4, 5 एंगल है तो इसमें कितने एंगल्स होंगे, 5, एंड 6 एंगल्स में कितने होंगे, 6, ओके। तो 6 के बाद कितना एंगल्स आएगा, 7, विच इज़ द नेक्स्ट फिगर इन द पैटर्न। तो नेक्स्ट 7 फिगर किस में है, लेट्स फाइंड आउट। 1 2 3 4 5, इसमें 5 एंगल्स हैं, रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, वी डोंट नीड 8, हमको तो कितना चाहिए, 6 के बाद 7 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, C1 इज़ द राइट आंसर। C में कितने एंगल्स हैं, 7 है, सो 6 के बाद हम लोग का C1 आएगा 7 एंगल्स, ओके। तो C इज़ द राइट आंसर, राइट C ऑन द बॉक्स एंड यू कैन ड्रॉ ऑल्सो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 5.1, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, मिसिंग नंबर्स लिखेंगे। 90 is given here. Here's a 2 empty box. 69, 62, 55 and 48 is given here. So let's find out difference. Difference कितने में, 55 और 48 में हम लोग पहले difference find out करेंगे। 55 subtract with 48, तो कितना का सब्ट्रैक्शन आया, 7 का आया। तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 7 का डिफरेंस है। तो 48 प्लस 7 55, 55 प्लस 7 62, 62 प्लस 7 69। तो 69 में कितना प्लस करेंगे, तो 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 76, 76 प्लस 7 83, 83 प्लस 7 90। सो यह कितना आएगा, 76 and 83. So which one is, D1 is the right answer. Okay, so we have to find out the difference, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना था।